Let's start. Okay. So, as we are going to cover decision trees today, so this is a game which is like built over decision trees. Okay, so what I will do, let's start with characters. So the character which I am considering is, let's take school. Let's take Bill Gates only. Okay, so according to Bill Gates, we will answer these questions. So first is your character a famous YouTuber. So majorly he is not. Okay, does your character live in India? No. Have your character really existed? Yes, Bill Gates exists. Is your character a female? No. Is your character a sportsman? No. Does your character live in Korea? No. Is your character an actor? No. Bill Gates is not an actor. No, he is not dead. Does your character? Yes, Bill Gates live in America. Is your character? Yes, he is related to technology. Is your character linked with cars? No. Does your character do different intros? I don't know. Wear glasses. Yes, Bill Gates wear glasses. Is your character from criminal case? I don't know. Is your character Indian? No. Is your character associated with Microsoft? Yes. Did your character made Windows OS? Yes. So I really don't know. Okay. So it thought that I am thinking of Bill Gates. Okay. So अब ठीक है ये तो मैंने लिया. Just tell me some character of your choice so that we can see that it is not like मैं कुछ बीच में joke नहीं कर लूँ. So this is a game which is called Akinator. Okay, search करो. You will get it first. Okay. Similarly, you can try this. Okay. It is built upon decision trees. So as per last session, like we discussed basically what classification is. Okay. So similarly for classification, we had this kind of plot in which red and green are different classes. Okay. So one we studied was K nearest neighbors. कि इसमें हम क्या करते थे, तो इसमें हमने क्या किया था, we had this plot. अब इसमें we had different classes. जैसे star was one and let's say squares है, and we were given some random point कि ये एक point है and we need to predict like does it belongs to star category or square category. So what we did, हमने let's say k equals to 5 लिया था. So we calculated the distance of all the points from this new point. So ये सारी distances we took out, total 10 distances, and from these 10 distances we got 5 nearest point. And let's say उसमें से 3 इन 5 में से 3 stars थे and 2 were squares. So 0.6 was probability of stars and 0.4 was probability of being a square. So we said that most probably it will be star. Okay, so this was the basic algorithm, which was k nearest neighbors. Okay. What was the disadvantage of this? There are a lot of calculation involved. Yeah, very much calculation. अब इसमें very much calculation का reason क्या था कि हाँ ठीक है हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, बट
That was one issue, but not the major issue. क्या हुआ अब one we had this one time calculation. One thing is this कि while training, okay, and second is inference time calculation, okay, और ये है while testing. अब क्या हो रहा है इसमें कि हम जब टेस्ट कर रहे हैं फॉर एवरी टाइम वी नीड टू कैलकुलेट द डिस्टेंसेस विद एवरी पॉइंट. अभी तो कितने 1 2 3 4 5 टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर. जब 10,000 पॉइंट्स है, 10,000 1 लाख पॉइंट्स है, 10 लाख है, 1 करोड़ पॉइंट्स है, तो इतनी ज्यादा बार हमें सबके साथ डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी एंड दैट टू एवरी टाइम व्हेन वी आर गिवन अ न्यू पॉइंट. मतलब हमें हमेशा वी नीड टू कीप दिस 6 जो भी 10 पॉइंट्स है every time we need to have these 10 points with us. मतलब मेमोरी में हमें लोड करना पड़ेगा हमेशा. ओके, सो व्हाट वी वांट आफ्टर दिस इज कि अब ये जो 10 पॉइंट्स हैं कैन वी गेट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, नॉट इंफॉर्मेशन, मतलब इसको कंप्रेस करके कैन वी गेट सम स्मॉलर साइज काइंड ऑफ थिंग कि हम उसी के बेसिस पर वी कैन फिगर आउट कि व्हाट दिस पॉइंट इज. एंड वी डिस्कस्ड कि डिसीजन ट्री क्या करता है इन द लास्ट क्लास. ओके, आई थिंक आई हैव अ डायग्राम. सो अब डिसीजन ट्री क्या करता है, वो ऐसी इफ एल्स कंडीशंस बनाता है. ओके, जिसके बेसिस पे लेट्स से कि उसने वी हैड सम फीचर, उसकी वैल्यू अगर 42.5 से लेस है सो इट विल गो इनटू द लेफ्ट पार्ट. उसकी वैल्यू 42.5 से ज्यादा है तो इट विल गो इन दिस पार्ट. सिमिलरली द गेम विच वी कंसिडर, लेट्स प्ले इट वंस मोर एंड लेट्स ट्राई इट विद ऑब्जेक्ट. ओके, अब ऑब्जेक्ट में हम क्या कंसिडर, लेट्स कंसिडर कंप्यूटर ओनली. ओके, अब इज इट इलेक्ट्रॉनिक का मतलब क्या हुआ, ये पहला नोट, it is asking is it electronic. So we will get two types, yes or no. Okay, एक साइड yes होगा, एक साइड no होगा. And if we are considering computer तो हम yes करेंगे. So उसने क्या किया, उसने ये जो पूरा पार्ट था हाफ ट्री, इट डिस्कार्डेड इट बिकॉज पहला नोट बेस्ड था इलेक्ट्रॉनिक पर कि हमारा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है या नहीं. तो left side demonstrated which is electronics and right side was non-electronics. तो इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास इंफॉर्मेशन है डेटा में कि हमारा पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड है, सो उसने राइट साइड को पूरा एलिमिनेट कर दिया. ओके, अब वी आर ऑन सेकंड. वो करते कैन वी डाउनलोड थिंग्स विद इट, विद कंप्यूटर, यस वी डेफिनेटली कैन. ओके, अब इधर आओ, इसमें पहला था इज इट इलेक्ट्रॉनिक्स, सेकंड क्वेश्चन इज इट like can we download things from it, उसमें भी yes और no. ओके, हम डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये वाला पूरा ट्री गायब. ओके, कैन वी ट्रांसपोर्ट इट इन अ पॉकेट, हम एक कंप्यूटर को तो नहीं कर सकते. ओके, फिर इज इट मेड बाय एप्पल, नो. लाइक कंप्यूटर सम आर मेड बाय एप्पल बट सम आर नॉट. कैन वी, डू वी नीड अ रिमोट कंट्रोल टू यूज इट, नो. डज इट हैव अ कीबोर्ड, यस. सो ये क्या कर रहा है, सो पहला क्वेश्चन क्या था, इज इट इलेक्ट्रॉनिक.
ओके, इसमें यस, नो। सेकंड क्वेश्चन क्या था, कैन वी डाउनलोड थिंग्स और नॉट? ओके, अब इसमें भी यस था। फिर ऐसे करते करते वी वुड गो डाउन इन दिस ट्री एंड लास्ट में हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी विच, लेट्स टेक इट, कैन इट बी फोल्डेड? हम कंप्यूटर को फोल्ड नहीं कर सकते, लैपटॉप कैन बी फोल्डेड। इज इट फाउंड इन शॉपिंग मॉल्स? यस। डज इट hold valuable information? Yes, it can hold. Can you create 3D models with it? Yes. Is it located on outside of house? No. Is it articulated? I don't know. Does it have motherboard? Yes. Does it display color? Yes. अब कंप्यूटर, ओके, मैंने ऐसे कुछ नहीं बताया, आई जस्ट आंसर्ड द क्वेश्चंस, है ना। एंड उसने ये ट्री कंस्ट्रक्ट किया, इट फॉलोड सम पाथ एंड उसके वजह से इट रिटर्न की एक कंप्यूटर। ओके, बट हाउ इट डिड दैट? ओके, पहला क्वेश्चन तो ये है, ओके, कि ये जो ट्री इसने बनाया, इट कंस्ट्रक्टेड, हाउ इट डिड दैट? ओके, so there is a complete mathematics for that. Okay, so let's take one simple example. क्या है, दिस इज एन एग्जाम्पल कि हमारे पास लाइक दिस इज द वेदर आउटलुक, कि सनी था, रेन था, ओवरकास्ट था, वी हैड थ्री डिफरेंट टाइप्स। फिर उसमें टेम्परेचर, हॉट, माइल्ड, कूल, देन ह्यूमिडिटी थी नहीं थी, विंड चल रही थी, एंड उसके बेसिस पे डिड द पर्सन प्लेड और नॉट। ओके, सो इसमें क्या किया बेसिकली, अब क्या हो सकता है, फर्स्ट लेट्स सी कि व्हाट इज द डिसीजन ट्री फॉर दैट। ओके, सो आउटलुक था, सो आउटलुक के बेसिस पे वी हैड सनी, ओवरकास्ट एंड रेन, हमने तीन डिवाइड करे। ओके, अब ओवरकास्ट का देखते हैं। ओवरकास्ट में पहले ओवरकास्ट, इसमें आई डोंट नो व्हाई इट इज नॉट वोल्टेज, लेट मी सेव इट एंड सो ओवरकास्ट, 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 इसमें यस, 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 अब कुछ नो तो है ही नहीं। सो ओवरकास्ट में सीधे भी रोड की, हाँ, इफ द वेदर इज ओवरकास्ट इट विल प्ले। ओके, देन सनी आता है, वन टू, लेट्स क्लियर इट फर्स्ट, सनी, 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 सनी एंड सनी, इसमें नो, 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 यस, यस। ओके, सो टू यस एंड थ्री नोस। ओके, ऐसे ही सनी का था, सनी में नाउ इट आस्क्ड कि तुम्हारा विंडी था नहीं था। सो वी हैव एक्चुअली थ्री क्वेश्चंस है, कि सबसे पहले जो टॉप नोड था विच इज कॉल्ड रूट नोड। ओके, सो इसके बेसिस पे इसने करा, देन वी हैड सम, दीज नोड्स आर कॉल्ड डिसीजन नोड्स। सिमिलरली ये भी डिसीजन नोड्स है, ये भी डिसीजन नोड्स है, एंड दीज आर लीफ नोड्स। ओके, अब क्या हो सकता था कि इसने इट आस्क्ड फर्स्ट कि आउटलुक हम सबसे पहले करेंगे, देन विंडी किया, बट व्हाट वी कुड हैव इज सबसे पहले विंडी लिया। ओके, अब उसमें कि विंडी है, नो, स्ट्रॉन्ग एंड वीक है, सो स्ट्रॉन्ग विंड है एंड वीक विंड है, एंड देन उसके बेसिस पे यहाँ आउटलुक का पूछ सकता था, बट वाई we are having outlook. So you can see that we can have different kinds of trees for a single problem. But how can we get
the best? Like that is the question. Before going to that, actually we have two concepts. One is entropy, one is information gain. Okay. Entropy, entropy physics में क्या थी? Like, can anyone tell? अभी बोल रहे पढ़ गए हैं और Randomness. randomness. Yes, exactly. So, अब physics के basis पे it was randomness. Okay. But यहाँ हम physics की बात नहीं कर रहे. We are talking in terms of data. Okay. So, randomness का क्या? The randomness, okay, we can say, but it is a little bit different. So let's take, we have, this is a scatter plot of our data, and one is this plot, and one what we have is, अब इसमें से what do you think entropy किसमें higher होगी? Left or right? Left वाले thumbs up करो, right वाले thumbs down करो. मैं एंट्रोपी पूछ रहा हूँ, एंट्रोपी ज्यादा किसमें है? ओके, सो आई थिंक आई गॉट विच आर ग्रीन एंड रेड पॉइंट्स. ओके, कंसिडर कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि दैट प्राइसेस का कि लार्ज कैप एंड मिड कैप. मान लो कि ग्रीन कैप इज लार्ज कैप एंड रेड इज स्मॉल कैप, ऐसा मान लो. ओके, बट दैट इज नॉट द क्वेश्चन हियर. द क्वेश्चन इज किसमें ज्यादा रैंडमनेस और किसमें ज्यादा एंट्रोपी है. Okay, so I think I got 2 or 3 thumbs up. So they are saying that here entropy in A is higher than entropy in B. Okay, but क्यों? Can anyone explain it? There is more diversity in first fit. Yes, exactly. Okay, so यहाँ पर like simple अगर हम molecules के भी बात करें, अगर एक molecule is comprising of 99% volume and molecule B is getting 1%, and similarly if we have in another container 50-50%, तो first में ज्यादा होती है entropy. Okay, so same is the case here, but now see it as समथिंग कि हम इसमें इंफॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं. ओके, अगर तुम्हें एक प्लॉट राइट साइड वाला गिवन है, एक प्लॉट लेफ्ट साइड वाला गिवन है, सो विच प्लॉट प्रोवाइड्स यू मोर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग जो हमारा एग्जाम्पल था विच वॉज लार्ज कैप एंड मिड कैप. लेफ्ट वाला राइट वाला? लेफ्ट वाले के लिए थम्स अप, राइट वाले के लिए थम्स डाउन. Down. Okay. One person is saying right one. Left. So let's take it कि हमारे पास
what we had left वाले में we had high entropy and right वाले में we had low entropy. Okay. अब राइट में देखो, लाइक कंसिडर कि 90% रेड पॉइंट्स एंड 10% आर ग्रीन पॉइंट्स. सो वी आर 90% श्योर कि जो भी नया हाउस का डेटा पॉइंट आएगा इट विल बिलोंग टू स्मॉल कैप एंड देयर आर ओनली 10% चांसेस फॉर अ लार्ज शेयर. बट कंसिडर कि एंड लेफ्ट वाले में यू हैड इक्वली चांसेस कि स्मॉल कैप से भी हो सकता है, राइट कैप से भी हो सकता है. ओके. सो हेयर इन द लेफ्ट साइड यू आर नॉट श्योर कि मेजरली क्या आएगा, लार्ज और रेड दोनों की इक्वल चांस है. बट हेयर इन द राइट वन, अगर लार्ज कैप वाला आया, सो यू डिडंट हैड दैट मच कॉन्फिडेंस कि ग्रीन पॉइंट्स में ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था. इट वर ओनली 10%. यू वर मेजरली एक्सपेक्टिंग कि ये स्मॉल कैप से आएगा. बट द न्यू डेटा पॉइंट विच केम इट बिलोंग टू, ये जो नया आया ये लार्ज कैप वाला. ओके. सो इसमें क्या हुआ, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये स्मॉल कैप से, यू आर एक्सपेक्टिंग कि ये स्मॉल कैप से होगा मेजरली, बट इट केम फ्रॉम अ लार्ज कैप. सो इसमें क्या हुआ, यू गॉट सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, लाइक इंफॉर्मेशन गेन तुम्हारा ज्यादा हुआ. मतलब इंफॉर्मेशन गेन यू कैन अंडरस्टैंड कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो हुआ उसके बीच में डिफरेंस. ओके. एंड जो ये इंफॉर्मेशन गेन होता है, लाइक इट्स एंट्रोपी के is inversely proportional to information. ओके. रीजन एक बार और देखते हैं. लेफ्ट वाले ग्राफ में क्या होता है, वी हैड 50-50% चांसेस फॉर बोथ टाइप्स. ओके, लेट्स से कि रेड वाला क्लास ए है, ग्रीन वाला क्लास बी है. ओके. अगर तुम्हारे पास इसमें क्लास ए से आया, यू आर एक्सपेक्टिंग इट 50% चांसेस है क्लास ए का, एंड क्लास बी से भी आया, सो किसी भी क्लास से आए यू आर नॉट गेटिंग दैट मच डिफरेंस. हाँ, वो कि दोनों की इक्वल इक्वल चांसेस थे तो किसी से भी आ सकता है. बट इन द राइट ग्राफ वी हैड 90% चांसेस कि क्लास ए से आएगा एंड ओनली 10% चांसेस क्लास बी से आया. ओके. अगर नया डेटा पॉइंट आता है, इट इफ इट बिलोंग्स टू क्लास ए, नथिंग मच चेंज कि हाँ क्लास ए से ही आया है. वी न्यू कि इट वुड कम फ्रॉम क्लास ए बिकॉज देयर वाज 90% चांस. बट इफ इट कम्स फ्रॉम क्लास बी, like we can say कि we were not expecting it to come because 90% chances थे कि class A से आएगा and only 10% were there. But here what happened कि हमें expected नहीं था, but then we got to know कि हाँ ये एकदम से आ गया without any expectation. So there was some information gain. So अब qualitative we talk. Okay, so entropy जो होता है, okay, let's not go that much into mathematical depth now. Okay, so अब क्या किया तुमने, एंट्रोपी. नेक्स्ट स्लाइड यही है. सो एंट्रोपी का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ पहले. ओके. अब इसमें क्या था, जो भी तुम्हारी क्लासेस होगी, वी आर फर्स्ट assumption we are talking now only for non numerical values. नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब डिफरेंट क्लासेस, मतलब जैसे लो कैपिटल हाई कैपिटल, दीज आर टू डिफरेंट क्लासेस. सो हम ये क्लासेस के बेस पे डिफरेंस करेंगे. वी वुड नॉट टेक इट टू न्यूमेरिकल कि जैसे प्राइस क्या है,
जैसे regression values, we would not go into decision trees for regression. We would keep it only for classification. Okay. So for that, क्या होगा तुम्हारा जो भी output label है, as in this case we had low cap and high cap. Okay, इसमें you would calculate probabilities for both low cap के भी high cap from data which is given to you. Okay, उसके basis पे you would have, let's say, in 10 data points. 10. Okay, so here we already discussed two scenarios. इसमें 50% low cap थे, 50% high cap थे. Here 90% था, here 10%. अब entropy का formula, it is equals to negative of summation of I equals to 1 से n pi log pi, where n is number of classes and pi is the probability for that specific class. जैसे here low cap and high, है ना? अब let's calculate for this case. Okay, let's here we considered 50% and here 90 and 10%. So for left and right ऐसे कर लेते हैं. So entropy equals to minus of 0.5 log 0.5. ये बाहर नेगेटिव साइन था, कीप इट 0.5 log 0.5. ऐसा क्यों पहले के लिए किया? इसको तुम दो क्लासेस के लिए करोगे तो इट विल कम माइनस p of a log p of a minus probability of b log p of b. ओके, सेम इसको मैंने ओपन करा है, बस इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, which is I think I don't have log here. Radians degrees, yeah, log, yeah. So 0.5 into log of 0.5. ये इतना आता है into 2. So 0.3 है. अब we had negative sign तो ये हमारे लिए 0.3 ही आएगा. That is 0.3. I think this is log base 10. Okay, whatever. And similarly, in this case, हमारा जो entropy आएगा, it will be 0.9 log 0.9 minus 0.1 log 0.1. इसको कैलकुलेट कर लेते हैं. So 0.9 into log of 0.9 plus into minus, which is 0.04 plus 0.1 into log of 0.1, which is 0.1. So it is 0.141. Okay, value में भी देखो. Here, for this we are getting 0.3 entropy, and for right case 90-10 के लिए we are getting 0.14. So
इस केस में हमारी एंट्रोपी सिमिलरली ज्यादा थी एंड इंफॉर्मेशन गेन in left side was less as compared to right side because entropy and information gain are inversely proportional to each other. Okay, up when we need to find. Okay, so ऐसे similarly for that example, तुम आउटलुक जो था आउटलुक का एंट्रोपी निकालोगे. ओके, सो हाउ इट इज डन इज हमारे पास चार थे. आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी. ओके, सो आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी. ओके, अब आउटलुक के बेसिस पे यू हैड थ्री डिफरेंट क्लासेस. सो अगर आउटलुक के लिए करोगे तो यू वुड हैव थ्री डिफरेंट लाइक सनी, ओवरकास्ट, रेन. ओके, अब सनी, रेनी और तीसरा क्या था, ओवरकास्ट. ओवरकास्ट. ओके, अब आउटलुक का बेस्ड ऑन दिस आउटलुक में क्या है, 1 2 3 4 5. 5 सनी, ओवरकास्ट कितने हैं, 4 ओवरकास्ट एंड रेनी 2 4 5 रेनी. इस कॉलम का यू वुड कैलकुलेट द एंट्रोपी, है ना, कि आउटलुक के बेसिस पे, नॉट आउटलुक, प्ले टेनिस का जो था, जो एंड सनी के बेसिस पे यू वुड गेट थ्री डिफरेंट डेटा फ्रेम्स. सो सनी वाला ये होगा, इसका ये होगा, इसका ये होगा. अब इन तीनों डेटा फ्रेम्स का यू वुड कैलकुलेट द एंट्रोपी. So here we have 2 yes and 3 no's. So minus 2 by 5 log 2 by 5 minus इधर वो 0.97 आ रहा है. Similarly, overcast के लिए, rainy के लिए you would calculate your entropies and इसको weighted कर दोगे because you had 5 data points here, 4 data points here, 5 data points here. Total 14. So 5 by 14 into इसका एंट्रोपी प्लस 4 by 14 into इसका एंट्रोपी प्लस 5 by 14 into इसका एंट्रोपी. सो वेटेड एंट्रोपी आ गया चिल्ड्रन का, है ना, एंड उसने एंट्रोपी जो पेरेंट का निकाला था माइनस वेटेड एवरेज जो ये 0.69 है, ये सब्ट्रैक्ट कर दोगे. दिस इज व्हाट आवर इंफॉर्मेशन गेन इज. ओके, अब ऐसे you would do for all these value, मतलब कॉलम्स के लिए, आउटलुक के लिए किया, टेम्परेचर के लिए किया, ह्यूमिडिटी के लिए किया, विंडी के लिए किया. ओके, सो यू वुड हैव 4 डिफरेंट इंफॉर्मेशन गेन, IG1, IG2, IG3, IG4 बेस्ड ऑन डिफरेंट कॉलम्स. इसमें से विच एवर इज maximum you would consider that for your decision. Okay, so coming back, जो हमारा डिसीजन ट्री था, इसमें सबसे पहले इन्होंने आउटलुक को लिया है. सो द रीजन आउटलुक को लेने का क्या है कि based on comparison of all 4 of these columns, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन गेन था, इट वाज हाईएस्ट फॉर आउटलुक. ओके, एंड देन हमने
विंडी और ह्यूमिडिटी को अलग अलग लिया बिकॉज सिमिलरली इस ट्री में वी हैड हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन फॉर विंडी एंड इसमें हमारे पास ह्यूमिडिटी के लिए हाईएस्ट इंफॉर्मेशन है एंड दिस यू वुड रिपीट रिकर्सिवली फॉर एवरी द नंबर ऑफ डेप्थ यू वांट ओके सो ये जो डेप्थ ऑफ ट्री होता है ये एक हाइपर पैरामीटर होता है यू कैन keep it okay so this was a very high level overview of working of decision tree okay so let's see some intuition of this okay so ये तुम्हारा वो था डेटा पॉइंट्स अब तुमने एक बार यू रिपीटेड दिस एंटायर कंप्लीट प्रोसेस ओके जैसे आउटलुक था यू डिसाइडेड सब पे आइटरेट करने के बाद कि आउटलुक का इंफॉर्मेशन गेन सबसे ज्यादा हाईएस्ट आया ओके सो दिस इज वन आइटरेशन उसके बाद क्या किया तुमने आउटलुक के बेसिस पे डिफरेंशिएट किया सो तुमने बोला कि like this is currently we are talking of this example shows you for different classes but try to like get it कि दो different classes में कैसे होगा so हमने एक नोट फाइंड किया जिसमें yes and no था so उसने बोला कि लेफ्ट साइड yes है no है और vice versa and then we found out the second decision note उसके बेसिस पे we got this ऐसे ही हम रिकर्सिवली रिपीट करते गए ओके सो अब क्या किया कि इस वाली लाइन से इधर और इस वाली लाइन से ऊपर देन इट बिलोंग्स टू राइट क्लास अगर इधर से लेफ्ट साइड है और इस वाली लाइन से नीचे है देन इट बिलोंग्स टू ग्रीन क्लास सिमिलरली यू कैन एक्सटेंड इट कि इस वाली लाइन से ऊपर है और इससे राइट साइड है और इस वाली से भी लेफ्ट है तो ये ग्रीन क्लास है इस रीजन में इट इज रेड ओके so like this is the geometric intuition and I think one more yeah and let's see now the code so we are using scikit-learn for this अब iris actually एक डेटा सेट है so इसमें क्या है iris वाले डेटा सेट में we have actually four features which is petal length petal width sepal length sepal width and the definitely class अब इसमें थ्री है एक तो सेटोसा है क्लास एक्चुअली दिस इज क्लास नेम सेटोसा वर्जिनिका एंड सो वर्सिकल ओके सो ये डिफरेंट टाइप्स है फ्लावर्स ये बेस्ड ऑन कि पेटल की लेंथ क्या है पेटल की विड्थ क्या है सेपल लेंथ सेपल विड्थ क्या है उसके बेसिस पे दिस इज अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम and we are applying decision tree to that. Okay, so हमने जो सेटोसा वर्सिनी का क्लास नेम्स है उनको like we numerically encoded it 0, 1 and 2 में okay and then हमने एक sklearn में से we imported decision tree classifier हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया we passed it our data and उसके बेसिस पे यहाँ पर ट्रेन हो गया फिट फंक्शन व्हाट इट डज इट जस्ट ट्रेन्स एंड फॉर्म दिस ट्री ओके एंड उसके बेसिस पे हमने प्रेडिक्ट किया देन एक्यूरेसी स्कोर्स निकाले वी आर गेटिंग अराउंड 96% एक्यूरेसी फिर हम इस ट्री को प्लॉट करते हैं एक्चुअली दिस ग्राफ इज नॉट दैट गुड सो दिस इज द वन लाइक हमारे पास ऐसा ग्राफ आता है फाइनली okay so I will share this notebook with you and I told you कि maximum depth जो होता है we chose here maximum depth 3 तो मतलब 1 2 3 like if we want we can take it to maximum depth 10 also but क्या होता है if we increase the depth very much okay so let's take
इस वाले एग्जांपल में देखो कि अगर तुम्हारा जो डेटा पॉइंट है वो यहाँ पर आता है अराउंड दिस पॉइंट, ओके, बट हमने क्या किया कि ये वाला जो पूरा बॉक्स है दिस बिलोंग्स टू ग्रीन ग्रास, है ना, बट यू कैन सी कि ये बहुत क्लोज है इन रेड पॉइंट्स के। सो अकॉर्डिंगली अगर हम देखें तो ये होना चाहिए रेड बिकॉज इट इज वेरी क्लोज टू ग्रीन पॉइंट्स। बट हमने क्या, हमने इस प्लेन का इतना ज्यादा डिवीजन कर दिया है, अब ये हर एक लाइन बिलोंग्स टू हाउ मैनी, मतलब हमारे पास अराउंड 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है टोटल। सो वी आर हैविंग मैक्सिमम डेप्थ ऑफ 6, ओके, 6 की डेप्थ है। अगर हम इसको और बढ़ाते जाए तो हम इसको और लाइक पार्टीशन करते जाएंगे एंड दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड ओवरफिटिंग बिकॉज यहाँ पे देख लो कि अगर एक पॉइंट यहाँ पर है इट बिलोंग्स वेरी क्लोज टू रेड पॉइंट, बट ये लाइन जो है इसके बेसिस की वजह से वी आर क्लासिफाइंग इट एज अ ग्रीन पॉइंट बिकॉज उससे जस्ट पहले 5 नोड्स में ये लाइन नहीं, 6 वाला जब हमने आइट्रेशन किया तब ये लाइन आई, ओके। अब ऐसे तुम 7th करोगे सो मे बी वो यहाँ पे एक अलग डब्बा बना देता सा फॉर दिस ग्रीन पॉइंट एंड ऐसे ही तुमने मान लो यू इंक्रीज इट टू 100, सो वो इसको भी एक पूरा पॉइंट मानने लग जाएगा, फिर इधर इनको भी ग्रीन करते जाएगा, सो ये ओवरफिटिंग होगा। और अगर तुम लाइन कम कर दो, ओके, सो लाइंस कम हो गई, अब इसमें इट इज नॉट एबल टू क्लासिफाइड प्रॉपर्टी क्योंकि यू कैन सी सम ग्रीन वाले यहाँ भी आ रहे हैं, सम रेड वाले यहाँ पे भी है। दिस प्रॉब्लम इज कॉल्ड अंडरफिटिंग। आई थिंक वी टॉक्ड अबाउट इट इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस, अंडरफिटिंग ओवरफिटिंग का, ओके। सो this was everything from my side. Like